कि हम कैसे एक पोजीशन क्रैक कर सकते हैं एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट और एनालिस्ट व्हाटएवर। कि like this is the place where I can hone my skills, and because mentors are there. क्या चैलेंजेस हमें मेजरली देखने मिले मार्केट तक जाने के लिए, और कितना टाइम लगा आपको ये मॉक क्लियर करने में? So I enrolled in Rise Institute, and from then on I got mentored by a lot of good mentors. ग्रेट। सो हाउ वाज लाइक योर इंटरव्यू जर्नी? ये आदित्य, कैसे हो आप? Good evening, sir. I'm good. How about you? आई एम गुड, आई एम गुड। एंड आदित्य, आई वाज वेरी हैप्पी फॉर यू। हमने इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, 7-8 महीने लगा, बट हाँ, आप बहुत कुछ सीखे, बहुत। मैंने आपको ग्रो होते हुए देखा, एंड आज हम एक फायर एआई में सीनियर डेटा एंड एनालिटिक्स पोजीशन एज अ इंजीनियर क्रैक किए। सो इट इज ग्रेट अचीवमेंट। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम बहुत कुछ जानते हैं। सो इट वाज अ डिस्कशन, इट वाज अ पॉडकास्ट। हम ओपन माइंड होके बहुत सारी चीजें समझेंगे। बट द टुडेज जो गोल है, जो टुडेज ऑब्जेक्टिव है, ये समझना है कि हम कैसे एक पोजीशन क्रैक कर सकते हैं एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट और एनालिस्ट व्हाटएवर। ये डेटा डोमेन की पोजीशन के लिए हमें कितना पढ़ना है, क्या चैलेंजेस हमें ड्यूरिंग दैट जर्नी आएंगे, और ऐसा क्या करना है जिससे हमें ये पोजीशन मिल जाए। सो हम आदित्य की जर्नी से ही सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और वी विल हेल्प ईच अदर डेफिनेटली। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बट हाँ, जब तक हमें एक मेंटोर बताने वाला नहीं है कि क्या करे, जैसे आदित्य आज हमें बताएगा, हमें समझेगा कि लेटेस्ट ट्रेंड में ये चल रहा है और हमें ये करना है, डेफिनेटली वी विल फॉलो, और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। सो वेलकम अगेन, थैंक यू सो मच आदित्य फॉर दिस Thank you, शॉर्ट sir. नोटिस। मैंने जस्ट बताया आपको और आप यहाँ पे आ गए। सो प्लीज बताओ मुझे आपके बारे में कि आपका हाउ वाज योर जर्नी आफ्टर लाइक ग्रेजुएशन। क्या क्या आपने किस टाइप की जॉब्स किए, हाउ डू यू नो अबाउट द राइज, और ये सिलेक्शन तक का जर्नी कैसा था, मुझे आपसे जानना है प्लीज। Yes, sir. So, good evening, everyone, and good evening, sir. So, basically, I graduated from Theology College of Engineering in Triple E department. That is a very core department. And since my third year, I was very much invested in data analytics. So, fortunately, after graduating, I got the campus placement inside Mu Sigma as a TDS. So over there, मुझे opportunity मिला somewhat on like SQL, Power BI, Python, but the core understanding of how business works with these tools and technologies, I was not very much aware because मुझे बहुत सीखना था. So during my journey over there, I learned a lot, but because of projects and everything, the like company restructuring की वजह से I came out. And after which, I spent few months researching about a good courses outside in market, and I got to know from a friend about Rise Institute, where they were providing courses and like mentorship and guidance. So first thing I did was I went and attended the masterclass and the demo sessions to get a hands-on experience of what it is about. तो मुझे आशीष सर का डेमो सेशन सुन के एंड अंडरस्टैंड करके मुझे लगा कि लाइक दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन होन माय स्किल्स, and because mentors are there 24/7 available, they'll be on the call, they'll be off the call, they will guide you through step by step process. So I enrolled in Rise Institute, and from then on I got mentored by a lot of good mentors. There's a good team out there in Rise Institute. Ashish sir hai, Akshay sir hai. Then we have HR, Vaishri ma'am, Unnati ma'am, and other mentors like Parmeshwar sir, Shubhraju sir. Shubhraju sir specifically was in giving me ideas about finance, and Parmeshwar sir was getting me ready for the market. Like, what are the question expectations? आपसे क्या पूछे जाते हैं? And Ashish sir and Akshay sir, they are like pro in these tools and technologies in regards to business, what business demands. So I learned a lot over there. हाउ डू यू गेट लाइक आफ्टर मॉक क्लियर, लाइक हमारा प्रोसेस तो आई थिंक सबको पता ही है। आफ्टर ट्रेनिंग हम मॉक मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस लेते हैं, मॉक क्लियर होने के बाद में विल गो इन द मार्केट। क्या चैलेंजेस हमें मेजरली देखने मिले मार्केट तक जाने के लिए, और कितना टाइम लगा आपको ये मॉक क्लियर करने में? आर दे लाइक वर्थ, और इंटरव्यू में और मॉक इंटरव्यूज में कितनी सिमिलैरिटीज थी? Says हमें 15 days जो बोला गया था कि like we have to complete that in that 15 days tenure, from not knowing how to give interviews to getting step by step guidance of क्या क्या पूछा जाता है and कैसे हमें frame करना है, because at the end it is a 1 hour interview call, and उसमें से the main point is general introduction. You should know what you're talking about in front of the interviewer. So on this part we had a thorough sessions, and we had to practice a lot with our mentors. I got a huge guidance from both of those mentors, Parmeshwar sir and Shubhrasu sir, on that कि मुझे frame कैसे करना चाहिए, how to keep it inside the time limit so that सामने वाला भी won't get bored out of my introduction. And overall, uske baad, we had a lot of understanding in regards to technical skills.
specifically like SQL and Power BI, because that is the like the core of what data analysis is all about. So that was it. ग्रेट सो हाउ वाज लाइक योर इंटरव्यू जर्नी आफ्टर लाइक मॉक इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में कितने हमें कॉल्स आए कैसा वो जर्नी था कितना चैलेंजिंग था हमारे So जितने हाँ yeah. मतलब कितना टाइम लगा हमें टू लाइक और आई थिंक आप 2 बार फाइनल राउंड तक गए एंड देन इट इज लाइक द पोजीशन वेंट ऑन होल्ड सो हाउ यू टैकल दिस लाइक फेलियर एंड दिस स्टफ So I'll say honestly, getting a job interview in itself on today's market is like a blessing, first of all. The thing is, when the interviews came for me, I was quite happy. I tried to give my best, but there are other candidates who have better experience, like experience counts, right? But there's also a matter of skill. Maybe my skill was not up to that level at that time, and maybe I didn't got selected. But what I gained from that interview was the experience and the exposure. जो मुझे आगे चल के जो द फायर एआई इंटरव्यू आई वाज गिविंग आई गॉट क्लैरिटी ऑफ व्हाट द इंटरव्यूअर इज आस्किंग फॉर एंड व्हाट इज द आउटपुट आई शुड प्रोवाइड टू द ऑप्टिमम लेवल. ग्रेट सो ये फायर एआई वाज द लाइक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया इट इज लाइक जस्ट इन 2-3 years they like on board 200 plus clients and they are like crazy expanding their services तो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको सीनियर डेटा एंड एनालिटिक्स पोजीशन मिला हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट दिस पोजीशन एंड हाउ डू यू लाइक मैच द जेडी क्योंकि जैसे आप स्टार्टअप है बहुत सारी चीजें पैरामीटर वो देखते हैं एंड दे आर ऑफरिंग सीनियर पोजीशन टू यू सो हाउ लाइक कितने राउंड्स हुए क्या लेवल ऑफ इंटरव्यू हुआ कैन यू प्लीज गो थ्रू अबाउट योर लाइक या इंटरव्यू जर्नी Yeah. So it was around July first week, I believe, when I got a mail from one of the consultancies, to be honest, because I was highlighting my LinkedIn profile very thoroughly, and the consultancy was looking for assets around Mumbai. So I gave my resume ahead, and I was asking for like looking out for a job which was related to data and analytics engineering position. So I got to like get in connect with FireAI HR over there. Like in the first interview itself. It was like, see, the first thing is I we have to prepare what the company is about, what is the company standing on, what is the basis of it. So मैंने उस पर research करा, and FireAI is basically just for general purpose. FireAI is a causal decision intelligence based company that is basically making a real time decision on the data that is provided to them, and they work on a KGQ methodology. That's what I got to know. Like in the interview process, the primary core things that they asked was exactly what we were being prepped for, like SQL, you know about CTE, joins, Windows function, understanding the core, like how to retrieve the data from two specific tables, and in Power BI, like how do you do the scheduled refresh and all. So these were the questions asked to me, and I was also being asked about how do you handle the data, like the pipeline, the ETL process. So these were one of the most frequent questions that was being thoroughly assessed on me. because we also work together. After like syllabus completion, we started working together on 2-3 projects जहाँ पे आपने सुपर एजीआई एक्सप्लोर किया वी वर्कड ऑन क्लॉड एआई के कुछ एपीआई एंड ऑटोमेशन वाला पार्ट जहाँ पे हमने Yes. आई थिंक MSG 91 के बारे में आपने रिसर्च किया था एंड आई थिंक एआई सेंसी भी हमने सेटअप किया सो ऐसे बहुत सारे बॉट्स एंड ऑटोमेशन पे हमने काम भी किया तो वहाँ पे मैंने आपके क्लॉड एआई पे कुछ रिसर्च पढ़े जो कि आपने बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंट्स बिल्ड किए अबाउट द पाइथन अबाउट द डेटा साइंस अबाउट द एनालिटिक्स हाउ डू यू केम टू लाइक कि हाँ यही बनाना है यही रिक्वायर्ड है कैसा था वो जर्नी लाइक हाउ मच आप अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में कैसे कुछ सीखे क्या क्या सीखने मिला बताओ ना So talking about my freelancing journey with the Rise Institute, technically Vision Rise, it was like I was very much invested with Ashish sir in regards to the project. तो बहुत सारे government related projects and कुछ personal projects पे हम काम कर रहे थे. So I'll say Super AGI AI Senses were one of the like communication like platforms where we can communicate with our customers or general purpose. And MSG 91 is basically we are connecting APIs. APIs like are used for connecting backend with the front end to be specific in general. And in these kind of scenarios, हमें ये आना चाहिए कि कहाँ पे issue आ सकता है, because just because we have put APIs and a proper मुझे मैं personally freelancing के time पे I had to face a lot of issues, so I used to ask Ashish sir a lot about these topics, and I also used to take YouTube references. तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट जो प्रोसेस है
to understand and maintain the workflow itself in itself is very it is, you should have a little bit hands on it, and you should also know the ways to tackle it. जैसे Claude का sir ने बताया, Claude Pro Max, we have the subscription. So I used to ask the, like, what are the possible cases where we have, like, their challenges might be coming, and what are the ways we can boost that specific project, in which like how to increase the revenue per se. So these were some of the things that I learned as a freelancer under Ashish sir. हम्म सो यहाँ पे ना अभी जैसे पावर बी एंड एसक्यूएल में कुछ कोर कंसेप्ट्स है जो कि इट्स समहाउ ट्रिकी, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एवरी कंपनी आस्क्ड अबाउट द डैक्स वाला पार्ट. Yes. ओके, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स को डैक्स पे डर लगता है बिकॉज वो बहुत वास्ट हो गया. इट इज लाइक हाउ डू यू बिल्ड अ कोड विद डैक्स, हाउ डू यू बिल्ड अ प्रिडिक्शन विद डैक्स, एंड लाइक थाउजेंड्स ऑफ डैक्स वी कैन बिल्ड. सो हाउ डू यू टैकल दिस डैक्स वाला क्वेश्चन एंड लाइक सिक्योरिटी गवर्नेंस, और ये क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल किया या आपने कैसे प्रिपेयर किया इन शॉर्ट? I'll say honestly, theoretically during sessions, I used to just get the knowledge. But the question comes जब सामने question आता है, when you're giving the exam, that's the moment when you know how much you remember. So मेरे लिए primarily for, like, as I've said, mentorship was there every day. So every day, every 1 hour is there. So they will give you the chance to answer these kind of questions. So me knowing around only 30 to 40% in theory, uh, like after doing mentorship, I'm confident that I can say around 80 to 90%. I'll not say 100%, but around that number. But because I was always attending mentorship every evening, and the mentors were giving us new questions. Vaishnavi ma'am was posting a lot of questions on LinkedIn, and I used to go through them. कि What are the possible case scenarios? जैसे questions जो industry में पूछे जाते हैं, जैसे LTI, HCL, टेक एंड दीज एंड ऑल कंपनीज. तो मैं उसके थ्रू गो थ्रू करता था. डैक्स के लिए वी ऑल्सो हैव डैक्स जीपीटी इन चैट जीपीटी. आशीष सर ओनली वाज द वन हु टोल्ड अस, एंड वी कैन यूज दैट प्रोवाइडेड वी शुड नो द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की कौन सा डैक्स कहाँ पे डालने से द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस वुड बी लुकिंग ब्यूटिफुल. बिकॉज एट द एंड इट इज विजुअलाइजेशन, तो यू हैव टू मेक इट द बेस्ट सो दैट क्लाइंट को समझ आए कि क्या हो रहा है उनके बेसिकली लाइक डेटा में. सेकंड, लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एवरी कैंडिडेट इज हैविंग लाइक फियर ऑफ, वो फेलियर का डर होता है. सो मुझे बताओ ना, जब 2 राउंड पोजीशन होल्ड पे चले गए, सो हाउ डू यू मैनेज दैट, दैट वे, लाइक दैट पार्ट. एंड सेकंड थिंग, वो भी जो आपका लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में अचानक रिस्ट्रक्चरिंग हुआ और आपका जॉब गया, इन शॉर्ट, द इन शॉर्ट ले ऑफ्स एंड वट एवर, लाइक यू कांट लाइक रिजॉइन एंड रिलोकेट इजीली, बहुत सारी चीजें आती है उसमें. वो सिनेरियो, वो डाउनफॉल आपने कैसे टैकल किया, और हाउ डू यू लाइक ओवरकम फ्रॉम दैट, दैट पार्ट? Okay, so I would say honestly, when I was being laid off, it was around 2024 end, and that time, since I have mentioned I'm from core background, I didn't knew anything like any proper path to take up, like कैसे हमें ABCD follow करना है. So that time I was just openly looking out for resources in YouTube. There are a lot of playlists. बट उसमें ऐसा होता है कि दे विल आइदर टीच यू वेरी प्रो जो आपको अभी नहीं चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड, हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, दैट इज व्हाट आई बिलीव. एंड वो जनरली नहीं दिखता है. यू हैव टू रिसर्च अ लॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट टू गेट इट. तो उस टाइम मैं राइज इंस्टीट्यूट के बारे में जाना था, एंड आई गॉट टू कॉन्टैक्ट आशीष सर. एंड आफ्टर लाइक गेटिंग डेमो क्लासेस एज आई मेंशनड, मुझे फंडामेंटल्स क्लियर हुए, इवन दो आई न्यू सीक्वल बिफोर ऑल्सो. But there's a lot of concept Ashish sir always used to talk about inside classes. And जो भी doubt है, like it was used to be around 1.5 hour class session every evening. And I used to, like, we had half an hour sessions for doubt clearance. So I used to always question him during those times. And yeah, I was invested as much as sir was. सो आदित्य, आपने ये जो रिसर्च वाला पॉइंट है, तो हाउ डू यू लाइक रिसर्च एवरी क्वेश्चंस, लाइक कैसे आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को फ्रेम करते थे, हाउ द मेंटरशिप हेल्प यू इन लाइक फ्रेमिंग द क्वेश्चंस? So there is always a basic set of questions, and there is a set of questions that is going around the basic set of questions. So primarily SQL में वही पूछा जाता है, but in a different manner. Like let's say we are talking about joins. So like the interview, like my personal interview question was you are joining two tables, that is employee table and department table, and I want the list of records of like employees who are not like have null in their department. So how do you get that? Like उसमें anti join वाले concept लग रहे थे. So I explained him how I'm gonna like write the query.
And he also asked me to use Windows functions, ranking functions, and what is the difference between rank, dense rank. तो ये सब आप तभी समझते हो जब आप अप्लाई करते हो. So I used to invest myself a lot inside like practicing the queries. And we also had Vaishnavi ma'am's set of questions we used to solve, and we used to submit the assignment. So this gave us a ओके ग्रेट ग्रेट आदित्य सो वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस लाइक किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है अबाउट द प्रोजेक्ट अबाउट द जर्नी एंड अबाउट आदित्य के साथ अगर बात करना है तो यू कैन in the era of the AI, so how much AI can affect our work? Because right now, if you see the all the things that's doing by the AI, so whatever we are doing in the with the data, we can do with the help of AI. Whatever making in the data modeling in the Power BI, we can do with the help of AI. All the things, and the right now, if you see the all the code is written by the AI. So definitely, it will be birth for the in the long term to learn all these things, or it will be taken by the AI in the short term. I will say first thing, like it is a valid point to be honest that AI is cutting down the previous older jobs. But I want to just I remembered a statistic like there was a mention like AI has taken over around 1.11 million jobs across the globe. But you see, Mukesh, the standing is right now, according to the same statistics, 1.22 million jobs are newly created from the AI. So it is not about AI is eating away the job. It is like rather than new opportunities are coming. And the only process that we have to follow is we have to be relevant. Just be relevant. Sir and Unnati ma'am has also given tips about updating Naukri profile every now and then. That will make your resume float above, and that actually helped out a lot. And I got calls from Mumbai across Mumbai and Bangalore. So this might help you in getting placed soon, and I hope you do. ग्रेट Okay. मैं भी इस पे एक आंसर देना चाहूंगा विशाल सी Mhm. फर्स्ट थिंग अगर हमें ये जॉब मार्केट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रैक करना है डेफिनेटली वी नीड टू कीप ऑन अपग्रेडिंग आवर सेल्फ बिकॉज मार्केट इज कीप ऑन चेंजिंग ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको ठीक है Yes. फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग हमें ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच द जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जाम्पल उनको चाहिए फाइनेंस डोमेन और अगर हम वो डोमेन छोड़ के 10 डोमेन के बारे में बता रहे दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज लाइन लगा पड़ा है मार्केट में ठीक है सभी को जॉब चाहिए दे आर अग्रेसिवली हंटिंग द अपॉर्चुनिटी एंड दे डोंट हैव द इशू ऑफ बजट ठीक है अगर ये सिनेरियो अगर हमारे पास सिमिलर आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना वो जेडी मैच करना पड़ेगा डेफिनेटली वी कांट लाइक प्रिटेंड दैट कि हमारा ये फेक प्रोजेक्ट हमने इस पे काम किया उस पे काम किया बट यू कैन शो दैट वी आई बिल्ड अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट which is like based on research on this domain I have that much amount of knowledge currently I'm holding on that particular domain and that knowledge और अगर आपको अलाउ किया अलाउ मी टू प्रेजेंट माय प्रोजेक्ट बताओ वहाँ पे प्रोजेक्ट ठीक है मैंने एक प्रोजेक्ट वो जो डेकॉस का मैं बता रहा था ना मैंने उनके इंटरव्यू में उसके प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट बताया बोले 15 मिनट में क्लोज हो गया ठीक है एचआर विल लेट यू नो बोले डायरेक्ट तो कैसा होता है कभी कभी हम जो बोल रहे हैं उसको नहीं समझ में आता प्रोजेक्ट बताओ ठीक है उसको जो डोमेन का प्रोजेक्ट चाहिए था मैंने बना के उसको बता दिया ये देखो और मैंने ये लेवल पे चला गया मैं उसी के कंपनी का प्रोजेक्ट वेब स्क्रैपिंग करके प्रोजेक्ट बनाया डेटा बनाया हार्डली 3-4 घंटे में बना और उसको प्रेजेंट करके बताया वो इंप्रेस हो गया आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट तो आपको Yes. एक तो अपग्रेड करना ही है सेकेंड थिंग पेशेंस अब देखो कंसल्टेंसीज भी हंट कर रही है एक्चुअल कंपनीज भी हंट कर रही है माइट भी जब तक हम राइट पर्सन को अपॉर्चुनिटी को नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा दूसरी चीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द मिस्टेक एंड यू आर डूइंग सच में अच्छा कि आप वो कहाँ पे गलती है क्योंकि ऐसे ही होगा आज आपको गलती समझ में आ गई यू स्टार्ट अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड धीरे धीरे हो जाएगा पेशेंस रखो सेकेंड थिंग कीप कंसिस्टेंटली ग्रोइंग योर सेल्फ लाइक डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा बट आप जो भी पढ़ रहे हो उसको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करो एंड प्रोजेक्ट बेस उसमें आपने क्या किया और उसका क्या बेनिफिट हुआ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मिला क्या ये इतना मेहनत करके मिला क्या ठीक है वैसे तो फिर नॉलेज का एंड ही नहीं है सो वर्क अकॉर्डिंगली एंड गो इन दैट डायरेक्शन आई होप विशाल मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया बस मतलब दिसंबर टू जनवरी उस टाइम आपको बहुत सारी ओपनिंग देखने मिलेंगी ठीक है मार्च के बाद हमें ओपनिंग देखने मिलती है ऐसे 3-4 बार सर्कल होता है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपनिंग्स होती है जस्ट नीड टू पेशेंस आप अपने एंड से अपग्रेड करते जाओ अपना काम रोज करना है दैट इज द पॉइंट वो आपके हाथ में है बाकी फिर कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है तो उस पर अपन ज्यादा नहीं सोचने का ऐसे कैसे प्रेजेंट करूँ कि हाँ कि मेरा सच में मैं प्रोडक्ट सपोर्ट पे हूँ, लेकिन मेरा ग्रोथ मैं चाहता हूँ कि मैं एज ए डाटा इंजीनियर पे जाऊँ, मेरा ये कंसर्न है। Sir, should I answer or आप answer करेंगे? प्लीज प्लीज आंसर करो आदित्य आप Okay. Sir, so I'll tell my personal thing. When I joined Rise Institute,
सी म्यू सिग्मा में आई वाज वर्किंग एज अ टीडीएस। इसका मतलब होता है ट्रेनी डिसीजन साइंटिस्ट। जैसे आपका डेटा इंजीनियरिंग में जो फैब्रिक आपने बताया, वैसे डेटा साइंटिस्ट एक अलग डोमेन, मतलब डेटा डोमेन ही है, बट इट इज मच मोर एडवांस एन एनालिटिक्स। तो उसमें मशीन लर्निंग, एनएलपी एज एन ऑल आप जैसे पढ़ रहे हो। तो द थिंग इज, जब मैं सर के साथ ज्वाइन करा था, सो आई गॉट टू नो दिस। डेटा साइंटिस्ट के लिए मैंने भी बहुत अप्लाई करे। बीइंग अ फ्रेशर ड्यूरिंग दोज डेज, आई अप्लाइड लाइक एनीथिंग, और सेम आप जैसे ही रिस्पॉन्स आया। एवरी टाइम अनफॉर्चुनेटली वाला वर्ड मिलता था मेल में। बट समवेयर और द अदर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कुछ रोल्स जो होते हैं ना, उसमें एक्सपीरियंस इतना वैल्यू करता है दैट एचआर वोंट टेक अनदर लुक एट योर प्रोफाइल जस्ट बिकॉज योर एक्सपीरियंस इज लेस। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप सिमिलर रोल जैसे डेटा इंजीनियर जा सकते हैं। एंड उसका मतलब एक होता है एसोसिएट और मे बी जूनियर। You just try to get back into that industry, you get a relevant like opportunity, उसमें आप exposure लीजिए। and then what you can do is, मतलब 1-2 साल का ये है, you have to be grinding अपना professionally and personally। आपका I believe knowledge is very good in fabric and everything। and आप इस flow में बस रहिए, you just be consistent because डेटा साइंटिस्ट के लिए मुझे अभी और 2 साल करने पड़ेंगे। देन आई एम स्टिल विद राइज इंस्टीट्यूट बाय द वे फॉर क्लाउड एंड एमएल एंड एवरीथिंग। सो जर्नी लर्निंग वाली है, आप रुकेंगे नहीं, आप बस अप्लाई कीजिए, गेट अ जॉब। बिकॉज मैं समझ रहा हूँ, आई होप यू आर फाइन नाउ। बाय द वे आपका हेल्थ इश्यूज मैंने सुना, तो आई डिडंट फील नहीं, गुड। अभी ठीक है, हाँ, इसलिए वापस मार्केट में आया था मैं ओके। कि एटलीस्ट जॉब कर सके। सो आई बिलीव आप बस कंसिस्टेंट रहिए। गेट एनी, मतलब जो रिलेटेड जॉब्स होते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट हो गया या तो डेटा इंजीनियर हो गया, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर की स्किल सेट। वो आप स्किल सेट पे फोकस कीजिए रादर देन जस्ट गोइंग डायरेक्टली फॉर द लाइक सीनियर रोल। उस स्किल सेट वाले सिमिलर रोल्स पे जाएंगे तो आई एम श्योर दैट आई विल गेट इट विद इन अ ईयर और टू। अभी मार्केट इज सैचुरेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर रोल्स के लिए भी। So just be like consistent, उसका और कुछ नहीं, like there's no, I personally don't know any other solution for that। सेकेंड थिंग, और एक रौनक एक चीज इसमें, उसका आपका जो गैप हुआ है, आई विल ट्राई टू फील दैट, ठीक है, उसमें आई विल हेल्प। ठीक है, जिसको हम थोड़ा एक स्टोरी में फ्रेम कर देंगे, वी विल लाइक ऐड सम अपॉर्चुनिटीज, लाइक जैसे कि बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ लर्निंग परस्पेक्टिव, वहाँ पे अगर हमारा काम बहुत अच्छा है तो हमें उसका पे आउट एज मिल जाता है उसका। तो वो चीजें भी वी कैन एक्सप्लोर। ठीक है, बट हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग होना चाहिए। अगर हम रॉन्ग प्रोफाइल के साथ मार्केट में जा रहा है, गैप लेके अगर मार्केट में जा रहा है, तो हमारा जॉब तो वैसे भी नहीं लगना है। ठीक है, यू कैन लाइक थिंक ऑन द कंपनी प्रोस्पेक्टिव कि आप ही कंपनी हो, कंपनी में आपके जैसा प्रोफाइल आया है, तो क्या आप खुद को ही लोगे क्या आपके कंपनी में? थिंक लाइक इन दैट वे, नॉट इन द इमोशनल वे कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं तो कितना अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं। ठीक है, एवरीवन डिजर्व अ चांस। सो कमिंग टू द अक्षय, लाइक 10 minutes इज देयर। गणेश, कैन यू प्लीज आस्क, Can लाइक I ask you some? प्लीज 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 आस्क। Okay, so my question is, I'm a fresher with a non-technical background. I recently completed my MBA in business analytics, and I'm currently looking for a fully remote opportunity in data analytics or business analytics. So, would you mind sharing how you prepared, what skill helped you get the job? Like, um mhm. okay, so let me like get it first correct. Like you have done MBA and you are looking for business analytics domain, right? Yes, yes, data Okay, analytics or business analytics, okay. And and first fully thing, remote. yeah, that is a question. Like a lot of companies would kind of say no to you because they demand a professionalism. Even in my company, I'm getting 5 days work from office and 1 day work from home. So that makes it a total of 6 days in a week. But Okay. yeah, you just have to be adaptable. There are companies who will give you the leverage of work from home, provided that you do maintain that attendance of working, like work in office schedule. And Mm-hmm. coming to the business analytics that you have mentioned, you have see the primary role. What is the role of, like, what is your understanding of business analytics? I just want to understand that. I'm just fresher. मतलब अभी Huh. मुझे पढ़ना है तो like उतना मुझे आइडिया Okay. नहीं है. So it is the same journey. Basically, business analytics क्या होता है? Business and analytics, right? So you have to understand the business. आपका जो कंपनी, जो क्लाइंट है, उसका बिजनेस आप देख रहे हो। नाउ द क्लाइंट बेसिकली क्या है? Whatever tools and technologies we are working for, it is gonna impact the business. You have to understand what, why, Okay, when, okay. how. So these are the key requirements of any business. And you're using these tools, SQL, Power BI, Excel, Python, whatever, to get to the solution as soon as possible. That is the general analytics part. So
like a lot of guys in my batch Okay. also are looking for Mhm. business analytics, and you can just go with the flow. And for the question part, for the preparation part, I believe there is a lot of Vaishnavi ma'am and Unati ma'am are there. You can just ask them the questions, the kind of questions and the kind of tools primarily are required for business analytics. They will provide you that. यस गणेश, लास्ट क्वेश्चन आप पूछो और देन वी विल स्टॉप द मीटिंग. यस गणेश, ओवर टू यू. आदित्य, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब अब डेटा साइंस मतलब एक वास्ट फील्ड हो गई, तो उसमें आप टाइम टेबल आपका कैसा था पढ़ाई करने का, और रिवीजन आप कितने बार करते थे? ओके, हाँ, गुड क्वेश्चन एक्चुअली. देखिए, मेरा ऐसा था कि लाइक मुझे बहुत चीजें पर्सनल काम भी रहते थे, एंड मुझे ये क्लासेस भी टाइम पे अटेंड करने की आदत लग गई थी. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं रात को ज्यादा इन्वेस्ट करता था. आई एम अ नाइट पर्सन बाय द वे, लाइक आशीष सेठी इज आल्सो लाइक मी. एंड द थिंग इज, लाइक रात को आफ्टर सेशंस व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू टेक नोट्स, जो सेशन में पढ़ाया गया है उसका रिवीजन मैं रात में करता था. सो दैट बाय मॉर्निंग मेरा लाइक पर्सपेक्टिव है, आई जस्ट टेक अ ग्लांस एंड मुझे याद रहेगा वॉट एवर इट माइट बी. एंड थ्रू आउट द डे, like I'll look outside for the opportunities and stay relevant with the market. जैसे एआई का, जैसे अभी सर ने, रौनक और किसी किसी सर ने बताया था, तो आई यूज टू जस्ट गो थ्रू व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, व्हाट इज हैपनिंग इन द डोमेन, एंड व्हाट इज द की स्किल रिक्वायर्ड फॉर मी, बिकॉज मैं भी स्टार्टिंग में डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा था. बट एज रौनक ऑल्सो हैज मेंशन्ड, एक्सपीरियंस मैटर करता है. तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. आई एम ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ फ्रेशर कंपेरेटिवली. सो आई गॉट टू अंडरस्टैंड दिस and I'm still learning. And मतलब मैं कहूँगा, you just have to divide the time, your personal time with the study time, and just be like active. Don't just break off that loop. एक बार वो चेन बन जाता है तो habitually and eventually you will, because मैं mentorship करने के बाद से like I have this habit of every evening studying for the same questions, similar patterns, and what are the new questions, set of questions that is asked in the interview. तो ये pattern break मत करो. That is all. थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू सो मच एवरीवन. आज का Thank सेशन you. वाज फुल ऑफ लाइक इनसाइट्स. हमने बहुत सारी चीजें जाना समझा. ठीक है, हमने विशाल के प्रॉब्लम पे भी डिस्कस किया. तो देखो, ये पूरा जर्नी दो फेजेस में डिवाइडेड है. ठीक है, फर्स्ट फेज तो आपका प्रिपरेशन. भाई अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो मार्केट में आप जाने लायक ही नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे रिजेक्शन ही आएंगे और हम कंटिन्यूस निगेटिव होते जाएंगे. ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन मिलेगा. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर. अभी प्रिपेयर क्या करना है? सो यू आर, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं कि यू आर हैविंग लाइक 15-20 टेक्नोलॉजी नॉलेज एट अ टाइम, कि भाई 15-20 लैंग्वेज आती है, सब टूल्स पे सब कुछ आता है. ऐसा कोई बंदा वो ढूंढ ही नहीं रहा है, पहली बात. ठीक है, सो व्हाट दे आर लाइक सर्चिंग फॉर अ नॉर्मल कैंडिडेट हु इज हैविंग गुड नॉलेज ऑन पर्टिकुलर टूल, लाइक पावर बीआई, लाइक एसक्यूएल. बिकॉज ये तो दोनों के सिवा तो होगा नहीं. एसक्यूएल से डेटा मैनेज कर पाएंगे, पावर बीआई से विजुअलाइजेशन बिल्ड कर पाएंगे. लाइक एआई, एआई क्या, जैसे क्लॉड एआई, एपीआई इंटीग्रेशन, एआई बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बेसिक चीजें. इस पे आपको अच्छा डीप हैंड्स ऑन चाहिए. तो टेक्निकली यू शुड बी स्ट्रांग. सेकंड थिंग, फंडामेंटल नेवर चेंज. आपको यहाँ से 10 साल बाद भी जॉइंट्स पे क्वेश्चन आएगा, 100%. सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएगा. ठीक है, डिप्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आएगा, गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा. ठीक है, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यही तो है जो वेबसाइट बना रहे हैं. टेस्टिंग पे क्वेश्चन आएगा. ठीक है, एसडीएलसी मॉडल पे क्वेश्चन आएगा. तो फंडामेंटल तो चेंज नहीं होंगे. ठीक है, और जो नया आया है उसके एक दो क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे कि एआई आप कैसे इंप्लीमेंट कर दोगे, प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, प्रोजेक्ट का आउटकम क्या था. तो दैट वाज द प्रिपरेशन वाला फेज. द सेकंड फेज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अब आपको मार्केट का तैयारी करना है, इंटरव्यू का. लाइक अभी इंटरव्यू का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. स्टूडेंट क्या करते हैं पूरे जर्नी में, सिर्फ वो जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस करते हैं. बट आपको ना बोलने का भी प्रैक्टिस करना है. प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डोंट एबल टू प्रेजेंट योर थॉट्स क्लियरली, अगर आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा आपका. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन स्किल. थर्ड, आप जो बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर टाइपिंग अ कोड, आपने फॉर एग्जाम्पल सेकंड मैक्स सैलरी का क्वेरी याद कर लिया. ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वट. तो आपने जो सेकंड मैक्स का क्वेरी आपने याद कर लिया, तो याद नहीं, आपको टाइप भी करते आना चाहिए. क्योंकि दे ऑल्सो चेक योर टाइपिंग स्पीड, कि ये बंदा सच में टाइप कर पाता है क्या, कि नहीं तो CREAT कर रहा है वो. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो आपको ना ये तीनों चीजों पे अच्छे से हैंड्स ऑन करना है. और देन लास्ट फेज, जो कि चौथा फेज है, अब मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है. देखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे किसी एक का रिज्यूम बनाऊंगा, उसको रिफ्रेम करूंगा, उसका स्टोरी बनाऊंगा, मैं मार्केट में फ्लोट कर दूंगा, मेरे रेफरेंस को दे दूंगा. 110% कॉल आएगा. 100 मैं ऐसा नहीं बोल रहा रोज ही 10 कॉल.
एक कॉल, दो कॉल 100% आएंगे, अच्छी कंपनी के आएंगे, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी आपको खुद होके कॉल करेंगी, क्योंकि रिज्यूम में सब सब चीजें प्रॉपर रहेंगी। बट क्या हम उसका ऑफर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? क्या हम कहाँ पे मार खा रहे हैं? तो यही तो आर्ट है एंड पेशेंस है। अभी आदित्य को सिलेक्शन का पहली बार में थोड़ी ना हुआ, दो बार वो पोजीशन ऑलमोस्ट क्रैक करने के बाद भी वेटिंग पे चला गया। और अब ऐसा है कि उसको जैसे पोजीशन, एक ऑफर लेटर मिल गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब तीन चार अपॉर्चुनिटी आ रही है कि हम रिमोट भी दे रहे हैं, अब हमारा बजट 9 लाख का है। बट अभी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ना भाई, हमने एक्सेप्ट कर लिया एंड वी डोंट लाइक बिट्रे द ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दिया। आप पैसा मैटर नहीं करता है, आपका ऑनेस्टी, ट्रस्ट मैटर करता है, एंड दैट इज द लाइक आदित्य आदित्य इज डूइंग द सेम। अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी इज हैंडिंग ओवर दैट अपॉर्चुनिटी टू अदर्स एंड हेल्पिंग ईच अदर। दैट इज द थिंग, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड लाइक फुल ऑफ चैलेंज वाली जर्नी है भाई। देयर इज नो सक्सेस। आदित्य को लग रहा होगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इट्स अ न्यू जर्नी। अंदर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होगा, अंदर आपका क्रेडिबिलिटी खाया जाएगा, अंदर आप निगेटिव होंगे, अंदर आपके दोस्त बनेंगे, दुश्मन भी बनेंगे, सब होगा। पिक्चर ही है पूरा, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, देर इज नो एज सच लाइक सक्सेस, इट इज ऑल अबाउट जर्नी। और क्या वो जर्नी को हम एंजॉय कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं? क्या हमें अच्छा लग रहा है सब करके? सो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, वहीं पे हमें कंटिन्यू करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगेन वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, वी आर प्रोवाइडिंग दैट 5 days सेशंस जो कि थे डेमो सेशंस यू कैन से। डेफिनेटली हम वो प्रोजेक्ट वहां तक कंप्लीट करेंगे, मैं मॉडलिंग विजुअलाइजेशन तक आपके साथ रहूंगा, आप वो सभी बना पाएंगे। But those who wants to join a batch, upcoming batch, the enrollments are open. You can connect the support number, और आप भी इस अपकमिंग बैच में ज्वाइन कर पाओगे। वी आर ओनली टेकिंग 20 कैंडिडेट्स, सो दैट हम उनके साथ भी काम कर पाए, सिमिलरली आपका प्रोफाइल बना पाए। दैट इज द वन पावर आई कैन लाइक 100% सक्सेसफुली मैं आपको दे सकता हूँ। दैट इज द गुड प्रोफाइल। ठीक है, आप ये जर्नी कंप्लीट करोगे, मॉक क्लियर करोगे, तो आपके हाथ में ऐसा रिज्यूम रहेगा, ऐसा प्रोफाइल रहेगा, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली किसी भी कंपनी के साथ सामने जाके इंटरव्यू दे पा रहे हो। उनका टेक्निकल 1 to 1 HR मैनेजर हर एक राउंड क्लियर कर पा रहे हो, और धीरे धीरे यू आर लाइक चेंजिंग योर लाइक स्ट्रगल टू लाइक ऑफर। तो ये पोजीशन आपको वहां पे मिल पाएगी। और बाकी जो भी कैंडिडेट्स है जो कि कहीं तो भी अपने पर्सनल रीजंस में स्टक है, दे आर ट्राइंग टू लाइक डू, बट कहीं तो भी स्टक है, तो उनके लिए एक ही एडवाइस, जस्ट डू योर लेवल बेस्ट। रोज पढ़ाई करो। नहीं आता है तो ये सोचो क्यों नहीं आ रहा है। राइस का जो मेंटरशिप है वो इसीलिए बना है। डेली पार्टिसिपेट इन मेंटरशिप लाइक पार्ट। रोज आओ, बोर करो मेंटर को, मुझे कॉल करो, टीम को कॉल करो कि नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो जब तक आपको नहीं भूख, तो फिर भाई लोग तो बिजी है ही। ठीक है, तो हंगर होना चाहिए भाई जॉब का। तो दैट इज द पॉइंट। आई होप सो। आदित्य, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने थैंक यू सर। बहुत अच्छे से गाइड किया। आपने एंड टू एंड चीजों, एंड टू एंड बताया आपने। और कुछ लास्ट सजेशन टू द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए एक लास्ट मैसेज फ्रॉम योर एंड, and then let's conclude this ओके, meeting. sure, sir. So I'll just say, guys, just be consistent. Follow the course content. Don't lag behind in that because that is very essential. Mentorship sessions जो होते हैं उसको actively attend करो, and just research on your end because it is not about Rise Institute that is going to give you the job. It is you yourself who's going to get the job. तो आपको अपने end पे भी उतना ही contribution करना है जितना mentors और आशीष सर कर रहे हैं. That is all. And I hope that every one of you who has attended and other people across Rise Institute will get the job as soon as possible. अभी थैंक यू सो मच गाइज, यू आप सभी इन तक रुके, और लेट्स कंक्लूड, रुक जाते हैं अभी। ठीक है, यू कैन लीव द मीटिंग।